Learn English daily. Everyone wants to learn English daily. Since English is the language that registers a brilliant impact on the person who is standing in front of you or whom you are talking to. Once you start speaking English proficiently, fluently, that indicates that you have a grip on this language. And if you have a grip, that means you have a lot of followers who will follow you. So English not only plays magic with your abilities, it also spells magic with your personality. Gripping on English language means that you are a confident personality. So in a short, English helps you grow your personality and makes you confident. So in this video, I'm gonna describe the meaning and the use of an English phrase called in a while. In a while. So you must be wondering what is it all about. So let's get started. अच्छा जी, इन अ वाइल जो है इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि इन अ शॉर्ट टाइम, सून, later. That describes that an action or something is going to happen in near future, though the exact minutes or hours are unspecified. अब मैं इसको ज़रा क्लियर बताता हूँ आपको कि कुछ एक्शन जो या कुछ चीज़ जो है वो थोड़े टाइम के बाद होनी है, लेकिन उसमें आपको ये नहीं अंदाज़ा कि उसमें कितने मिनट लगेंगे या कितने घंटे लगेंगे, लेकिन वो कुछ देर के बाद होनी है, तब आप यूज़ करेंगे इन अ वाइल. सो लेट्स यूज़ इट इन सेंटेंसेस सो दैट यू कैन मेमोराइज इट विद ईज. लेट्स कैच अप इन अ वाइल. थोड़ी देर में मिलते हैं. I'll come to your office in a while. मैं थोड़ी देर में तुम्हारे ऑफिस में आता हूँ. So let's have a dinner in a while. कुछ देर में डिनर करते हैं. Let's do this work in a while. चलो ये काम कुछ देर में करते हैं. तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी. मैंने काफ़ी एलैबोरेट किया है आपको इंग्लिश में भी उर्दू में भी, so that the people who understand English can understand it. The people who are still unskilled in English language, they can also understand it. So hope आपने ये पसंद की होगी वीडियो. प्लीज़ शेयर करें और हमें मोटिवेशन दें.